Welcome, students. How are you? So, my name is Faz, and in today's session, we are going to discuss about biology, or we should say science. Today, what we are going to discuss is a topic based on food. So, before we start, I would like to ask all of you, whoever is watching this video live or otherwise, you can please comment down your favorite food. What food do you like most, or what do you eat every day? What do you like to eat every day? So इस तरीके से हमें आप बताएं कमेंट करके कि फूड में आपको क्या पसंद है ठीक है। तो आप देख सकते हैं फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये हमारा टॉपिक है। फूड आता कहाँ से है? मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो हम सबको ही इस बात की जानकारी है कि फूड कहाँ से आता है। शायद, मुझे तो ऐसा लगता है। आप लोग फूड के कुछ सोर्सेस कमेंट करके बताइए कि फूड कहाँ से आता है। मतलब सुपरमार्केट से ख़रीदते हैं आप, या लोकल शॉपकीपर से ख़रीदते हैं, या फार्मर से डायरेक्ट ख़रीदते हैं, कहाँ? क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से हम फूड ख़रीद सकते हैं। ओके, सो लेट्स रीड व्हाट दे आर टेलिंग अस इन द फर्स्ट line in this one. What did you eat at home today? Okay, you can comment down if you have eaten something. I'm sure you must have eaten something at your home. Okay, find out what your friend ate today. Okay, so you also have to, आपको ये भी देखना है कि आपके दोस्त ने क्या खाया. Okay, this is just for fun, a little fun activity here. Okay, did you eat the same kind of food yesterday and today? तो आपने क्या कल और आज सेम टाइम, मतलब सेम तरीके का फूड खाया था, मतलब सेम चीज़ खाई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल अगर आपने दाल खाई थी, या खिचड़ी खाई थी या फिर बिरयानी, या फिर कुछ और खाया था काफ़ी, तो क्या आज भी आपने वही खाया? क्योंकि मुझे नहीं लगता आपने आज भी वही खाया होगा, क्योंकि हम लोग की जो टेस्ट बर्ड्स हैं, आई थिंक वो इस तरीके की हैं कि हम ज़्यादा दिन तक एक ही खाना नहीं खा पाते हैं, और कुछ लोग तो एक ही दिन में नहीं खा पाते। तो ये है। तो ओके,
सो हम कहीं थे, सॉरी, समथिंग वॉज रॉन्ग विद द नेटवर्क, दैट्स वाई माई वॉइस वॉज नॉट streaming. Okay, so it is already written there, you can see we all eat different kinds of foods at different times, isn't it? Okay, so food variety मतलब किस तरीके के फूड होते हैं आपको पता होगा, वेज, नॉन वेज, ओके, प्लांट बेस्ड फूड्स और animal based food or protein, like we have all of things like this. So activity one, we have some kind of an activity here. Okay, ask your friend in the school about items they would be eating during a day. See if you can also get this information from your friends staying in different states of India. So why they are telling us to ask those friends, if you have a friend who stays in not like maybe in South India or maybe in North India, where maybe a little far away from your state. So अगर वो थोड़ा दूर रहता है आपसे, तो आप ये फाइंड करेंगे कि जो वो फूड, मतलब जो उसका खाना पीना है, मतलब जो वो जो चीज़ें वो रेगुलरली खाता है ऑन अ डेली बेसिस, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं या कभी कभी बहुत बहुत डिफरेंट होती हैं. तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि जो हमारा फूड है, जो हम लोग खाते हैं, ये काफ़ी हद तक इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम रहते कहाँ हैं. ठीक है, मान लिए हम लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे खेती या फार्मिंग, ओके, क्रॉप्स वगैरह नहीं उग पाती, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको ऐसी चीज़ें खानी पड़ती हैं जो क्रॉप्स के बेसिस पे ना हो. जैसे कि हम लोग नॉन वेज या फिर बाकी सब चीज़ें जो और भी चीज़ें होती हैं, दाल हो गई, जिनकी क्रॉप्स नहीं, मतलब जैसे होती हो लेकिन ज़्यादा नहीं, तो उस ऐसी जगहों पर या तो वो लोग इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंपोर्ट करना, कोई भी चीज़ बाहर से मंगाना थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए वो रिसोर्सेज देखते हैं उनके पास आसपास क्या रिसोर्सेज हैं. अगर वो रिसोर्सेज उन्हें ठीक ठाक लगते हैं तो वो उन्हीं को अडॉप्ट करते हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट फूड आइटम्स बने हुए हैं. एक जगह आप देख सकते हैं, ये लेफ़्ट में शायद, ये तो शायद मुझे साउथ इंडियन कुछ लग रहा है ये सांबर इडली टाइप कुछ लग रहा है मुझे ये फिश है, आई थिंक दिस इज़ दाल, आई एम नॉट श्योर. आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या है क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि दाल ही है या कुछ और है. ओके, तो इसलिए क्योंकि बहुत तरीके के फूड होते हैं. फूड कोई एक चीज़ नहीं है, फूड जैसे कोई एक यूनिटी नहीं है. फूड, दिस इज़ नॉट अ यूनिट थिंग. फूड कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ओके, सो क्या, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बनाना इज़ अ फ्रूट, ओके, सो इज़ डोसा, so is dal chawal, and so is chicken. So these are all in the category of food, but they are really different from each other. Like I can say that chicken is really different from a banana. Okay, milk is very different from water. Okay, so these are different kind of food. Okay, so there seems to be so much variety of the food that we eat. What are these food items made of? Okay, now we have to understand. Okay, when we prepare food, for example, sometime uh, suppose we are preparing any sabzi, any vegetable. Say for example, I don't know how to prepare vegetables, but I will still try to tell you about the ingredients of the vegetables. So let's say we are preparing brinjal. Okay, so first we have to cut the brinjal, boil it or something like that, and put some salt in it, namak और मिर्च या फिर मसाले उसमें जो डलते होंगे. मतलब हम ऐसे ही ब्रिंजल नहीं खा लेते हैं. जैसा मतलब ब्रिंजल हमने या फिर कोई और सब्ज़ी हमने सब्ज़ी की दुकान से ली और हम उसको ऐसे ही नहीं खा जाते हैं. ठीक है, हम उसको पहले उबालते हैं, काटते हैं, या फिर अगर उबालने वाली हो तो उबालते हैं, काटने का नहीं है तो काटते हैं, उसके बाद उसमें मसाले मिलाते हैं, फिर बनाते हैं. ठीक है, फिर गलाते हैं, फिर खाते हैं. तो कोई ऐसी चीज़ कुछ नहीं होती है कि डायरेक्ट आप खा लें उसे. तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो उसको कहते हैं इंग्रेडिएंट्स. ओके, सो ये है इंग्रेडिएंट्स. ये पहले से ही वर्ड है इंग्रेडिएंट्स, बोल्ड में लिखा हुआ आप देख सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स.
To prepare vegetable curry, we need different kind of vegetables, salt, spice, and oil, and so on. We have already discussed that. Activity 2. Choose some of your items, some of the items you listed in the table 1.1, and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more to the list. Okay, now you can see the first letter food item which is shown here is the most common and most favorite item of all of us are Indians. Okay, so this is roti. So roti, we all know what roti is, and ingredients are atta and water. Okay, so we all know how our mothers and how are the grandmothers and people in our home prepare roti for us. We all know that. So I think we all have seen atta and water. Now you have to see what more very interesting. You cannot eat atta. Okay, you cannot just take the flour or atta and just eat it. Okay, you have to first mix it with water and like mix it very well, and then make some like कुछ उसका आटे का कुछ उसको मलते हैं, फिर कुछ बन इस तरीके से बनते, आपको पता है कैसे रोटी बनती है. तो ये आपको देखना पड़ेगा कि हर फूड ऐसा नहीं होता कि हम डायरेक्ट खा लेते हैं. कुछ फूड हम डायरेक्ट खा सकते हैं, जैसे आम होता है. आम मैंगोज़ हम सब ने खाए होंगे क्योंकि हम इंडियंस हैं. तो मैंगोज़ जो होते हैं आपने देखा होगा कि हम लोग डायरेक्टली खा लेते हैं. अगर हम चाहें तो अगर मैंगो पका हुआ है तो हम पेड़ से उतार कर उसे डायरेक्ट खा सकते हैं. नो नीड टू इवन आई वुड से यू नो व्हाट, उसको धोने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, लेकिन धोना चाहिए. मैं बस ऐसे ही कह रहा हूँ. कुछ लोग बिना धोए भी खा लेते हैं, लेकिन वो गलत चीज़ है. धोकर खाना चाहिए. लेकिन बात यह है कि मैंगोज़ आर कैन बी ईटन without any kind of preparation. Okay, similar thing is with a lot of other food like I think oranges. Can you give some examples of the food that we can eat just like without preparing anything, without preparing them? Okay, we can just eat it. Okay, so the next food item which is written is, please comment down that thing. Okay, the dal and its ingredients. Okay, so we have discussed about it. Okay, now let's see what we have to see over here. What do we find? Do you find some ingredients common for different food items? Discuss in class. Okay, now you have to see ingredients जो दाल में आपने डाले थे क्या वो सेम थे जो आपने सब्जी में डाले थे. Okay, रोटी में जो डाले थे, रोटी और दाल के इंग्रेडिएंट्स क्या सेम है? हाँ, हम कह सकते हैं वाटर सेम है. Yes, but I think they are like largely different. मतलब कुछ तो सेम है लेकिन लार्जली वो डिफरेंट ही हैं. ओके, सो ऐसा भी हो सकता है कि कई इंग्रेडिएंट सेम हो और डिफरेंट चीज़ बन जाए. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ salt, amount of water, amount of spices that you are putting into it. It also depends on that. Okay, so it's not totally like that. Okay, so food materials and sources, this is really important. Okay, it may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, yes, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants, which give us these grains. And then there are some food like milk, eggs and meat which come from animals. Okay, I think I have already told you. मैंने पहले ही आपको बोला था स्टार्टिंग में कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जो ज़मीन से उगते हैं, कुछ फूड एनिमल्स से हम लेते हैं, कुछ पेड़ से आते हैं. जो जैसे मिल्क हो गया, मिल्क हम भैंस या गाय का मिल्क पीते हैं. एग्स जो होते हैं वो मुर्गियाँ देती हैं, और मीट तो आपको पता ही है, चिकन वगैरह क्या होता है. ठीक है, तो ये सब जो हमारे हैं एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन और फूड हैं. प्रोटीन के बारे में हम बात करेंगे आगे चल के कि फूड में भी किस तरीके की क्या क्या होता है. ओके, तो एक्टिविटी 3 है. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources.
Some example are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list. Okay, table 1.3 we can see table 1.3. Food item is given. I think it's idli, and it is made up of rice, urad dal, salt and water. You can see salt and water is actually really common. That's very unique thing. Okay, so whenever you are preparing something spicy, you have to have salt and water in it. Okay, without that there will be no taste of spice or anything. Okay, because salt, I would say salt is really important. Water is also important, but salt is also important, especially when we are preparing some, okay, something which is salty. Okay, so the next is chicken curry. In chicken curry, of course, we are going to have chicken, spices, oil and ghee and water. Okay, the source is animal. You have to see the source of chicken curry is animal, and the source of oil and ghee that we put into it is plants and animal. Okay, so the next is kheer. Source is, you say the source is milk, and of course milk comes from animal. Rice is plant. Sugar, what do you think about sugar? Now this is really important. What is the source of this sugar? आपको क्या लगता है कि शुगर कहाँ से आती है? और आपने सुना होगा शुगर मील होती हैं ना, शुगर मिल्स होती हैं. तो असल में शुगर जो होती है वो आती प्लांट से ही है, लेकिन उसको प्रोसेस किया जाता है. ठीक है, तो शुगर केन आपने सुना होगा. शुगर केन जो होता है, जिसको हम गन्ना भी कहते हैं, यूज उत्तर प्रदेश में काफ़ी पाया जाता है. काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसकी खेती होती है उत्तर प्रदेश में. तो जो गन्ना होता है वो, तो आपको पता है शुगर केन, तो हम ये कह सकते हैं कि ये है hybrid. Okay, so we can say sugar is hybrid because although sugar comes from, like, basically sugar comes from plants, but it the sugar that we consume, like processed sugar, like that comes from a factory or a meal, I would say. Okay, again let's read further. Why do we conclude from what do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food. Ingredients like grains, cereal, vegetables and fruits. Animals provide us with milk, meat products and eggs. Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are all used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? Now, can you name some animals which give us milk? Okay, please comment down in the comment section. Okay, that will be fun to see what unique animals you are going to write down there. Okay, let's read from 1.3 now. Plant parts and animal products as food. Okay, now plants are one source of food which part. Let's just erase something here. Let me erase it first. Okay, so plants are one source of our food. Which parts of a plant? We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants. Okay, sometimes fruits, sometimes stems and even flower. Have you ever eaten a pumpkin? Okay, now you have to say. Now in plants, of course, we know there are a lot of things: stem, leaves and a lot of other things. So now we have to see, what do we eat? Do we eat stems? Do we eat leaves? Okay, so sometimes we eat leaves, sometimes we leave stems, sometimes other things. Okay, so let's see what exactly are the things that we find in plants. Okay, so you can see here, you can see different edible parts of plants. So we have a flower in plants, we have a fruit, we have a stem, we have a leaf, we have a bud,
we have a node, we have an internode, shoot system. Okay, primary root, secondary root, and root system. So this is the this is called root system, and whatever we have like protruding from the ground, so जो ground से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है उसको हम कहेंगे शूट सिस्टम, और जो अंदर है जो हमें नहीं दिखता है, हमें रूट्स नहीं दिखती हैं, थोड़ी बहुत दिखती हैं लेकिन मेनली वो अंदर ही होती हैं, तो उसको कहते हैं रूट सिस्टम. ओके, सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के हैं, नोड, इंटरनोड and all you can see. Okay, flowers dipped in the rice paste and fried. Some plants have 2 or more edible eatable part. So the meaning of edible means eatable. Okay, seeds of mustard plant give us oil and the leaves are used as a vegetable. Can you think of the different parts of a banana plant that are used as a food? Okay, think of more example where 2 or more parts of a single plant are used as a food. Now we have some kind of a table here. Let's see what this table is asking us to do. Okay, it is not asking anything, it is like food item with plant as major source. So brinjal curry. Ingredients that we put in brinjal curry is of course brinjal, chili as spice. Okay, it's have to be according to the taste. Oil from groundnut, mustard, soybean, any other plant. Okay. And plant part which gives us ingredients is fruit. Okay, brinjal is a fruit, chili as spice, any other plant, it's a fruit, and oil, it's a seed. Okay, the oil comes from the groundnut, mustard, soybean, and that's the source is seed. Okay, now let's move further. Now you have to see, do not try to taste unknown plants around you to see if they are, some plants could be poison. Now let me tell you something really important, and I have to tell you this, and this is really important. Anyone who is watching this video must see that this is actually really important. We may not think that it's important, we may find it funny, but it is. So कभी भी कोई भी आपको प्लांट अगर कहीं दिख रहा है, ठीक है, गार्डन में या जंगल में या रोड पे, तो आप कभी भी उसको ना खाएं, चाहे वो आपको एक बड़े से खेत में या फार्म में दिख रहा हो, क्योंकि वो पॉइजनस भी हो सकता है. पॉइजनस कई तरीके से हो सकता है. फूड हो सकता है वो फूड अभी तक पूरी तरीके से खाने लायक ना हुआ हो, इस वजह से पॉइजनस हो. कुछ फार्मर्स दे यूज़ पेस्टिसाइड्स ताकि उनकी क्रॉप्स में कीड़े ना लगे, so that to like so that their crop is not okay harmed, so that's why they use a pesticide. So we don't have to use like try to eat the food directly from the farm or directly from the crop. We have to purchase food from anywhere, or we have to see whether the person who is giving has to be really experienced person, and he has to be your father, okay, your mother, or what, whoever like you trust, and that person like should be really a trustable person, and you either have to purchase food from the supermarket or from your local vendors or your sabzi wala. Okay, that is why. But we never eat food from plant because they could be poisonous because of the various reasons that I have just told you. Okay, so this is really important, that's why I took a lot of time in discussing this one. So activity 4 we have, from all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plant. Which part of a plant? Identify these and list down the food item and plant parts as shown in figure 1.4. Okay, we have two spaces
and we have 1.3 table. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 फूड आइटम्स लिखने हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं और वो आपको कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे दूध हो गया, मिल्क हो गया, हमें मिलता है भैंस या गाय से, तो उनका सोर्स हो गया एनिमल, ओके। और दाल हो गई, वो शायद क्रॉप से मिलती है, तो उसका फूड सोर्स हो गया प्लांट। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। ओके, द एक्टिविटी 5, लेट्स रीड द एक्टिविटी 5 नाउ। ओके, आई एम गिविंग यू 5 minutes to read the activity 5. Okay, let's read it. Okay, let's read it together. You please read it, I am listening. Okay, don't worry, even if you are watching the video after live ends, that's okay. This video is being made or being streamed in such a way that even if you watch this video afterwards, like when I'm not online, when I'm not live, you will still find it interesting, okay. You will still find it watchable, and you will still see, you will still uh, feel that I am actually in front of you, okay. So that will be your thing, okay, the following day. Okay, I think now this is really important. Activity 5, I didn't pay attention, but actually it is really important. Now I have to read it. Okay, so take some dry seeds of moong or chana, put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seeds? Now, आपको क्या करना है, थोड़ी सी मूंग दाल लेनी है और चना दाल लेनी है, थोड़ी सी उसके क्वांटिटी को सीड्स को एक थोड़ा सा पानी में डाल के रखना है 1 दिन के लिए, पूरा 24 घंटे के लिए। अगर आज आपने 4 बजे ऐसा किया तो अगले दिन 4 बजे ही आप उसको निकालें, अगले दिन पानी उसका सारा निकाल दें एंड लीव द लीव्स इन द वेसल, और उनको जो लीव्स हैं आपकी उनको उसमें ही छोड़ दें बर्तन में। उसको एक गीले कपड़े से उसको रैप करें और उसको अलग रख दें। ओके, अगले दिन आप कुछ अलग उसमें ऑब्ज़र्व करेंगे, और वो क्या अलग होगा आप देख सकते हैं। वो जब आप रखने जाएंगे तो ऐसा होगा, और 2 दिन बाद वो ऐसा लगने लगेगा। तो ये क्या हुआ, हमको ये देखना पड़ेगा। सो ये देखते हैं ये कैसे हुआ। A small white structure may have grown out of the seeds. If so, the seeds have sprouted. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. अगर 1 दिन में ऐसा नहीं होता है तो 1 दिन और रख लें, ठीक है। तो ऐसा मैक्सिमम 2 दिन तक हो ही जाएगा। ओके ओके, डू यू नो वेयर द हनी कम्स फ्रॉम? आपको पता है कि हनी कहाँ से आती है? क्या आपको मालूम है कि हनी यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं शहद, कहाँ से आता है शहद? तो मैं बताता हूँ आपको। आई थिंक आपको पता भी होगा, आपने मधुमक्खियों को देखा है? मधुमक्खी या फिर बीज होती हैं, वो बजिंग करती हैं, बजिंग साउंड करती हैं। आपने कभी उनका छत्ता देखा है? देखा है आपने? वहीं से आता है हमारा शहद। ओके, सो बीज कलेक्ट नेक्टर, स्वीट ज्यूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। सो अपने हाइव में वो नेक्टर जो होता है, स्वीट ज्यूसेस फ्रॉम फ्लावर, मतलब वो फ्लावर्स से जाती हैं और फ्रूट जूस लेकर आती हैं और अपना उसमें रखती हैं, और उसके बाद वो जब पक जाता है तो शायद
वो शहद बन जाता है। ओके, flowers and their nectar may be available only for a part of the year. So bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. So bees जो होती हैं, क्योंकि जो फ्लावर्स होता है उसमें स्वीट जूस जो है वो पूरे साल में कुछ ही महीने निकलता है, इसलिए जो बीज होती हैं वो उसको कलेक्ट कर करके रखती रहती हैं। ओके ओके, नाउ हमने अपनी तो बात कर ली कि हमें क्या पसंद है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कहाँ से आता है, कहाँ से ख़रीदना है। ठीक है, हमें ऑनलाइन ऑर्डर करना भी आता है फूड, हम लोग बाहर जाके भी खाते हैं, सब चीज़ ठीक है। एनिमल्स कहाँ से खाते हैं? ना आपको ये चीज़ कभी आपने रियलाइज़ की है कि एनिमल्स का तो कोई स्टोर भी नहीं होता है, ठीक है, एनिमल्स की तो कोई शॉप भी नहीं होती है जहाँ पे एनिमल जाते हों और ख़रीदते हों और एनिमल्स ही खाते हों, ठीक है। तो एनिमल असल में एनिमल्स खाते कहाँ से हैं? तो एनिमल्स खाते हैं कहाँ से, ये मेरा है सवाल। ओके, सो लेट्स सी, डू यू हैव अ कैटल or a pet that you take care of, a dog, a cat, a buffalo, or a goat. Eat is okay. You will then surely be aware of the food the animal eats. अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गाय, ये कई तरीके के पालतू जानवर हैं। अगर आपके पास शेर है पालतू, तो भी आपको पता होगा क्या खाता है वो, ठीक है, तो आपको पता होगा कि वो क्या खाते हैं, ठीक है। तो several animals are listed in table 1.1, 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. So animals and their food. Buffalo क्या खाता है? Grass, oil cake, hay, grain. So these are the things that a buffalo eats. घास, ऑयल केक, आपको बता सकते हैं कि ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, ये सब क्या चीज़ होती है? प्लीज़ कमेंट करिए हिंदी में ये क्या कहलाते हैं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है भाई क्या कहलाते हैं। ओके, जस्ट किडिंग, आई जस्ट वांट यू टू कमेंट। ओके, रैट, सो रैट, चूहा क्या खाता है? आपको पता है चूहा क्या खाता है? चूहा चीज़ खाता है। ओके, सो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, अच्छा मज़ा आएगा। ओके, और भी चीज़ें खाता होगा चूहा लेकिन हम सब कुछ नहीं लिखना। ओके, लॉइन क्या खाता है? ओके, यहाँ पे है ख़तरनाक सवाल। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात में कोई भी शक होगा कि लॉइन दूसरे जानवरों को, इंसानों को, सबको खा जाता है। ओके, तो हमको ये देखना होगा, कुछ जानवर ऐसे हैं जो मतलब दूसरे जानवरों को नहीं खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सबको खा जाते हैं, ठीक है। तो जो लॉइन है वो खा जाता है, मैं लिख देता हूँ goat. Okay, other animals. What does a tiger eat? Tiger also eats others. Okay, we can just write other animals. Spider, I don't know what spider eats. I don't have a spider friend, but I have seen Spider-Man eating, but he was eating like normal things. Okay, I'm just kidding. Okay, please you can just fill it is okay, fill in the blanks here. हाउस लिजार्ड क्या खाती है? हमने देखा है कीड़े खाती है। काऊ क्या खाती है? घास खाती है और चारा खाती है। ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं? हम लोग चिकन खाते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं खाते हैं जिस तरीके से टाइगर खाता है, ठीक है। आपको डिफरेंस देखना चाहिए। हम लोग भी मीट खा लेते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं खाते हैं जिस तरीके से टाइगर खाता है या फिर लॉइन खाता है। वो तो डायरेक्ट जानवर को खा लेता है, उसका
अटैक करके, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं खाते ठीक है। तो बटरफ्लाई क्या खाती है, क्रो, अदर्स। सो आप लोग इस टेबल को पढ़ सकते हैं। अगर अब हम लोग टेबल 1.6 देखते हैं उससे पहले हम एक्टिविटी 7 को पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कुछ नई टर्म्स आई हैं जो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है समझना। सो लेट्स स्टार्ट। Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follow. Place animals which eat only plants or plant products in group 1. Okay, these are called herbivores. Okay, so जो animals सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ओके, और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स, ओके, एज यू कैन सी द वर्ड इज ऑलरेडी इन बोल्ड, हर्बीवोर्स। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ दूसरे ही जानवरों को खाते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं कार्निवोर्स। उनमें से एक लॉइन भी है जो दूसरे लोगों को खाता है लोगों कह रहा हूँ, दूसरे जानवरों को खाता है, ठीक है। Do you find some animals which eat both plants and animals? Okay. Now, dog is a really interesting example of omnivores. So, omnivores वो होते हैं जो प्लांट्स को भी खा लेते हैं और जानवरों को भी। यानी कि जैसे कि हमारा डॉग, वो मीट भी, नॉन वेज भी खाता है, वेज भी खाता है, थोड़ा थोड़ा इंसानों की तरह है, इसलिए हम उसके साथ रहना भी पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा डॉग्स जो है पेट के रूप में हमने देखे हैं, डॉग्स, ओके। नाउ दिस गर्ल इज थिंकिंग समथिंग। पहली wants to know where you would place human being while filling table 1.6. ओके, सो आपको क्या लगता है टेबल 1.6 में ह्यूमन बींग्स कहाँ होंगे? ये आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या ह्यूमन बींग ओमनीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं या हर्बीवोर्स होते हैं? इसमें जनरल लोगों की बात हो रही है। कई लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते हैं, खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सब खा लेते हैं। तो इसमें पसंद की बात नहीं हो रही है कि ह्यूमन बींग्स को क्या पसंद है, इसमें ये बात हो रही है कि वो लोग क्या खा सकते हैं, उनका पेट क्या चीज़ डाइजेस्ट कर सकता है, इसमें ये बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, आई डोंट लाइक ईटिंग नॉन वेज फूड, आई डोंट लाइक ईटिंग चिकन or any other non-veg food, okay, but it doesn't mean that I can't eat it. I can eat it, but I don't like to, I don't want to. So that's the you have to understand the difference, okay. So I think let's move to the next one now. So here are the keywords: ingredients, edible, nectar, sprouted seeds, herbivore, carnivore, omnivore, okay. I think this is the end of the topic here. Now let's read the summary. There is a lot of variation in the food eaten in different regions of India. We know that. So can you please comment down the favorite food of your region? Not your favorite food, but the food which is really famous in your city or in your village or in your state, okay, whatever you wish, you can just comment down in the comment section. The next is the main sources of our food are plants and animals. हमारे फूड का मेन सोर्स होता है प्लांट्स, जैसे कि सब्जी, दाल, इन सब के प्लांट्स, और एनिमल्स जैसे मिल्क, एग्स, चिकन एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं या दूसरे लिविंग थिंग बीइंग्स को खाते हैं उनको कार्निवोर्स कहते हैं, ओके. एनिमल्स विच ईट बोथ, सो जो लोग बोथ सब लोग मतलब सब कुछ खाते हैं उनको ओमनीवोर्स कहते हैं, ओके. सो हियर वी हैव सम एक्सरसाइजेस. You can
you know what, you can do these exercises by yourself. You can download this book, the link will be in the comment section. You can download the book, or you can just google search this book, okay, ncrt book for class 6 and the chapter that we are discussing. So the first question is, do you find that all living beings need the same kind of food? What do you think? The first question is, do you think, okay, so please comment down, do you, आप क्या आपको ऐसा लगता है कि हर हर जिंदा चीज़ को, हर जीवित चीज़ को एक ही तरीके का खाना मतलब चाहिए होता है? ओके, प्लीज़ कमेंट डाउन. ओके, डू यू मतलब आपको ऐसा लगता है या नहीं, प्लीज़ कमेंट करिए, या फिर अपने आप दिमाग में सोच सकते हैं. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, नेम 5 plants and their parts that we eat. Okay, this one is going to be interesting. You may need to do some research because we may not be able to tell, but if you are really interested in plants, I'm sure you can tell. The third one is, match the items given in the column A with the column B. So the column A is milk, curd powder, paneer, ghee, and column B. You can just match it yourself. Take the screenshot, match it yourself, or you can just, okay, do it yourself in your book, or if you have anything. So now we have the fill blanks. So fill up the blanks with the words given. Herbivore, plants, milk, sugarcane. This is going to be really interesting. I am not going to spoil your fun discussing this. Please do it yourself because this is going to be really fun for you. So these are the suggested projects and activities that you can do to understand this chapter a little better. Okay, now we have things to think about. Does everyone around you get enough food to eat? If not, what? Now, this is really important. As a human being, as people who have humanity. Now, because we have a heart and we care about our friends, we care about our neighbors, we care about a lot of people around us. Now you have to understand, क्या आप लोगों के बराबर में या आस पड़ोस में या मोहल्ले में या सोसाइटी में सब लोग ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छा फूड मिलता है या इनफ फूड मिलता है, हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है? आप लोग इस एज में हैं कि आप लोगों के पास नए नए आइडियाज़ होंगे और आपकी सोच अलग होगी, नई सोच होगी, तो इसलिए आप बिल्कुल इसका जवाब देने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में. ओके, I will be reading the comments of this specific question. I will be reading the comments of all the questions, by the way, but especially this one as well. Okay, the second one, what are the ways we can think of to avoid wastage of food? I think in the second question they have given a hint why everyone is not eating enough food, and the reason they have asked us is wastage of food. Okay, so in the second one they are asking why is so much wastage of food. Okay, now I think you already know that why is the wastage of food, and we should not waste our food. Okay, so now let's just revise whatever we have learned in today's session. Okay, and then we will end the topic. We started this topic discussing about food variety, कितने तरीके के फूड होते हैं, किस तरीके के फूड होते हैं, फूड्स क्या होता है. ओके, फूड में क्या क्या पड़ता है, आपको कौन सा फूड पसंद है, आपकी स्टेट में कौन सा फूड सबसे ज़्यादा खाया जाता है, आप नॉन वेज खाते हैं, वेज खाते हैं, मिल्क पीते हैं या फिर पानी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं, ये अलग अलग तरीके के फूड ही हैं. ओके, सो पहले हमने डिस्कस किया, देन वी डिस्कस अबाउट फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. ओके, फूड मटेरियल्स क्या होते हैं, फूड सोर्सेज क्या होते हैं, मतलब कहाँ से आता है जो हम लोग खाते हैं, वो असल में आता कहाँ से है, खेतों में से आता है, सुपरमार्केट में से आता है, एनिमल्स में से आता है, कहाँ से आता है. एक्टिविटी 3 ये थी, हमने देखा कि कौन सा फूड कहाँ से आता है, हमने इडली के बारे में डिस्कशन किया, चिकन करी के बारे में किया, खीर के बारे में किया. अच्छा, आप कमेंट करके बताइए आपको खीर ज़्यादा पसंद है या गाजर हलवा. ओके, मुझे पर्सनली गाजर का हलवा ज़्यादा अच्छा लगता है. आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए. ओके, आई विल बी reading all the comments. Okay, plants, then we discuss about plants, what are the different parts of a plant.
node, internode, bud, fruit, stem, leaf, and all. And the upper part of plant which grows outside of the ground is called shoot system, and the lower part which stays inside the ground and grows, it's called the root system. Okay, and then we discuss about brinjal. What are the ingredients that we put in brinjal, and what were the ingredients, and where do they come from, the source of the ingredients and the ingredients. ओके अच्छा, आपको पता है लस्सी कहाँ से आती है? लस्सी का फूड सोर्स ज़रूर आप कमेंट करके बताइए मुझे कि लस्सी कहाँ से आती है. ओके, प्लीज़, दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग. आपको क्या लगता है? ओके, देन वी डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग कि ये हमने फूड के साथ कुछ, आप चाहें तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इसको खा भी सकते हैं. दिस इज गोइंग टू बी रियली टेस्टी एज वेल. ओके, इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो ईट इट. Okay, it is going to be just tasty, like, okay. And then we discuss how do we get honey. Then we discuss about animal, कितने तरीके के एनिमल्स होते हैं, और अब आई शुड से ह्यूमन बीइंग्स भी उन्हीं में आते हैं शायद. हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं. लेट मी आस्क यू, व्हाट आर ओमनीवोर्स? ओमनीवोर्स कौन से होते हैं, और आप अपने आप को किस चीज़ में महसूस करते हैं? क्या आप ओमनीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, या कार्निवोर्स हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताएं. ओके, एंड दैट्स इट. वी ओनली डिस्कस दैट. नाउ आई थिंक दिस इज टाइम टू एंड द सेशन, सो आई एम सेइंग बाय बाय. Please ask your fellow students or fellow like your friends to watch these videos, these live streaming. You can also comment down and talk to us live while we are taking the session. Okay, so I really enjoyed taking these classes with you, all of you. So please comment down, subscribe our channel, share our channel to any of your friends. Okay, and be always happy. Now bye bye.